everyone. Very good evening and welcome to BYJU'S exam prep. My name is Alpa Sharma and we are in the middle of our series Basics of Critical Reasoning. This is part 2 of Basics of Assumption and I hope I'm absolutely audible and visible to everyone watching me live. I hope all of you have been doing very good today. Just a minute, guys. Give me a second. Yeah. I hope everyone's doing very good. I hope everyone can hear and see me clearly. I hope all of you have seen my part 1 under assumptions as well. So we've had one class for assumptions. We've had one class for conclusions. I'm going to have part 2 out of assumptions today so that we understand assumptions in even more detail and we're able to apply that to some questions in today's class. So that's going to be the agenda. Hi, Divyanshi. Good evening. That's going to be the agenda for today's session. If you still haven't seen the basics of assumption part 1, you can find the recorded video on our YouTube channel. Make sure you watch that. So, agenda, we understand the basics of assumptions and we solve some questions by applying the basics to them. But before we begin with the agenda of the session, a few things that I would want to tell you. One, we have a free workshop happening where Abhimanyu sir is going to be discussing how can you prepare for CLAT in the upcoming 200 days. Make sure you watch him live on 4th of June, 6 p.m. Don't miss out on this workshop, a very interactive one. 2, Abhimanyu sir is going to take all 4 months ka cumulative current affairs ka nichod on 27th of May, 9 p.m. So 4 महीने जो miss किया है अपनी GK का, don't miss this video at least. It's a complete revision series from January to April, 27th of May, 9 p.m. Remember, don't miss out on that. Hi everyone. Okay. And if you wish to prepare for CLAT 2024, here is a comprehensive code. That's the number of our counselors. Call them. They would let you know more about our program. Also, we have a scholarship test going on 28th of May, 11 a.m. Sit for the scholarship test with thousands of scholarships and then you can enroll yourself for our program very quickly. So everyone, I hope you've seen the first video of assumptions. Let's do a very quick revision of what we had done under that class. ठीक है, सबको एक जल्दी से रिविजन मिल जाएगा और फिर उसको आज और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. तो हमने क्या देखा था, एक पिक्चर देखी थी हमने where there are two people and दोनों का इस नंबर को देखने का पर्सपेक्टिव डिफरेंट है. One says it is 6, the other says it is 9. The one who says it is 6, ये इस पर्सन का प्रिजम्पशन है या अजम्पशन है कि ये नंबर 6 है. The other person who says 9, इस पर्सन का भी ये assumption है कि ये नंबर 9 है. On the contrary, reality में नंबर क्या है? Nobody knows. But whatever the person who sees, who speaks, believes in, that is the gospel for us और हम उसी को truth मानेंगे. तो assumption भी बोलने वाला person बनाएगा. तो अगर ये person कह रहा है 6 है, ये इसका assumption है कि 6 है, शायद reality में 9 लिखना चाहता हो examiner. ठीक है, तो ये हमने यहाँ ही नहीं किया, ये हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था. तो assumption क्या होता है? देखने वाले ने कुछ माइंड में चीजें अपने बना ली हैं, बैठा ली हैं. जो चीजें उसने मान ली अपने माइंड में, देखने वाले ने, बोलने वाले ने, वो हम उसका assumption मानते हैं. ठीक है, तो पहली चीज तो हम ये ध्यान में रखेंगे. दूसरी चीज, हमने ये डायग्राम देखा था. इस डायग्राम को भी वापस एक बार क्विक रिविजन देते हैं क्योंकि आज इसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे. सो लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन. ओके, अब इस डायग्राम में हमने क्या देखा कि ये एक इमेजिनरी हाउस है. ओके, और हाउस बनाना स्टार्ट करने में हम सबसे पहले हाउस का फाउंडेशन बनाते हैं. ठीक है. Oh, guys, just a minute. My camera just stuck. Give me a second. I'll fix it. Please stick with me. Stick with me, please. I will fix it in 1 more minute. I'm right here. 1 मिनट दो मुझे, इसको मैं फिक्स करती हूँ. Right here, please be with me, everyone. And here we go. Here I am, live with you. Thank you. हाँ, ठीक है अंशिका, अब ठीक है. ओके,
चलो तो वापस समझते हैं। हम जब घर बनाते हैं ना, तो सबसे पहली चीज हम क्या बनाते हैं? फाउंडेशन बनाते हैं घर में। ओके, फाउंडेशन के बाद हम वॉल्स बनाते हैं, पिलर्स बनाते हैं, वी मेक विंडोज, डोर्स। इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल रीजनिंग के लैंग्वेज में प्रेमिस। इनको हम वॉल्स, पिलर्स, डोर्स नाम दे देते हैं। और फिर जो रूफ बनाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं कंक्लूजन। तो ये हो गया रूफ। अब एक बार ध्यान से देखो, हमारी रूफ बन गई, हमारी वॉल्स बन गई, तो फाउंडेशन क्या होता है? छुप जाता है, हमें फाउंडेशन दिखता नहीं है, हमें घर बना हुआ दिखता है, महल बना हुआ दिखता है। वी सी द रूफ, वी सी द वॉल्स एंड पिलर्स एंड डोर्स, वी डोंट सी द फाउंडेशन। लेकिन ये फाउंडेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो घर को होल्ड करके रखता है। अगर ये फाउंडेशन को हिला दिया जाए ना, तो ये पूरा घर कोलैप्स कर जाएगा। इसका मतलब ये जो पूरा क्वेश्चन है ना, ये एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे रहा है, ये पूरा क्वेश्चन एक हिडन अजम्पशन पे डिपेंडेंट है, और अजम्पशन उसका बेडरॉक है, उसका फाउंडेशन है। अगर आपने इस अजम्पशन को हिला दिया, तो आपका पूरा क्वेश्चन, जिसको हम प्रेमिस और कंक्लूजन इंक्लूड करके बताते हैं, वो पूरा क्वेश्चन हमारा सकम कर जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सो वी हैव टू कीप दिस इन माइंड दैट एन अजम्पशन, ध्यान से सुनना सब लोग मेरी बात, बहुत ध्यान से। ये जो मैं कुछ चीजें आपको बता रही हूँ ना, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत सारी हेल्प करेंगी। पहली चीज, ये अजम्पशन हमेशा हिडन होता है। इट इज नेवर क्लियरली विजिबल टू यू इन द क्वेश्चन, इट्स ऑलवेज हिडन, बट इट इज ऑलवेज देयर। वो होगा, लेकिन वो एग्जामिनर क्लियरली लिख के नहीं बताएगा आपको, वो छुपा हुआ होगा, इट विल बी हिडन। टू, सो ये हो गया पॉइंटर नंबर वन। पॉइंटर नंबर टू, यू कैन मेक नोट्स इफ यू वांट टू। पॉइंटर नंबर टू, the assumption will be hidden, yet the entire question will be dependent on the assumption, and the assumption will be made by the question maker or the speaker. याद करो, ये वाला डायग्राम हमने क्या निकाला था? तो ये स्पीकर है, अजम्पशन यही बनाएगा, ये क्या मानता है उससे इसको कोई मतलब नहीं है। तो अगर ये स्पीकर है और आप हो ये रीडर, तो आप क्या मानते हो उससे कोई मतलब नहीं है। ये जो बोलने वाला जो मान रहा है ना, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो अजम्पशन हमेशा स्पीकर बनाता है, ठीक है। अब देखो, ये दोनों चीजों को एक बार अप्लाई करते हैं एक क्वेश्चन पे, एंड देन लेट्स ट्राई टू फिगर आउट एग्जैक्टली मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको। ये डायग्राम दिमाग में रखिए। अगर मैं एज ए टीचर आपसे कहती हूं, प्लीज वेट फॉर अ मिनट बिकॉज माई कैमरा इज स्टक, ठीक है, मैं आपसे ये स्टेटमेंट दे रही हूं, तो स्पीकर कौन हुआ? आई, अल्पा मैम इज द स्पीकर. So now since I am giving you the statement, please wait for a minute till I fix my camera, I am going to be making assumptions. आप listener हैं, आप assumption नहीं बनाएंगे। आप ये सोचेंगे कि मैम जब ये स्टेटमेंट दे रही थी, तो मैम ने क्या क्या अज्यूम किया अपने माइंड में। ये आपका जॉब है, ये assumption निकालना कि मैंने क्या assumption बनाया। assumption आपका नहीं होगा। Are you able to differentiate here everyone? एक thumbs up दे दो जल्दी से, so that I know you're able to understand ये स्पीकर और रीडर कौन है। तो रीडर क्या मानता है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। What we're concerned about is that what the speaker is assuming. Guys, I have no idea what's wrong with my camera. Oh, भैया ये एक ऐसी पोजीशन पर लाके मुझे अटका देता है कि मैं गाइस अगर एक बार और ये स्टक होता है ना कैमरा, आई हैव टू रीस्केड्यूल द क्लास। कोशिश करते हैं कंटिन्यू करने की, ठीक है, कोशिश करते हैं ये ठीक रहे। नहीं ठीक रहता तो एक बार क्लास को मुझे रीस्केड्यूल करवाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, आई थिंक दिस विल वर्क। अभी तो ठीक लग रहा है, ठीक है, समझ में आया बहुत सारे लोगों को। आगे चलते हैं। क्या था कि मैंने आपसे स्टेटमेंट दिया, प्लीज वेट फॉर अ मिनट, माय कैमरा इज स्टक। जैसे मैंने बोला ये जिंक्स हो गया, वो कैमरा स्टक हो गया, तो मेरे असम्पशंस होंगे। पहली चीज तो ये, तो आपको आई एम श्योर ये स्पीकर और रीडर के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया। दूसरी चीज, असम्पशन मैं निकालूंगी, लेकिन असम्पशन ना कभी भी लिखा हुआ नहीं होगा मेरे स्टेटमेंट में। जैसे मैंने बोला प्लीज वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स,
एक करेक्ट अजम्पशन बताती हूँ मैं आपको, फिर हम एनालाइज करेंगे वो अजम्पशन कैसे है. When I say please wait for a few minutes, I assume kids will understand my language. ये लिखना जरूरी नहीं था कि क्योंकि तुम मेरी लैंग्वेज समझ रहे हो इसीलिए मैं तुम्हें हिंदी में या इंग्लिश में बोल रही हूँ कि प्लीज 1 मिनट वेट करो मेरा. ये मैंने बोला नहीं, लेकिन ये मैंने मान लिया कि बच्चे क्योंकि मेरी बात इंग्लिश में या हिंदी में समझेंगे, इसीलिए मैंने उनको इंग्लिश या हिंदी में वेट करने के लिए बोला. आई आस्क्ड देम टू वेट इन इंग्लिश और हिंदी बिकॉज आई assumed that they would understand my language. So now let's come to a few pointers that I have for you. Let's come to the first pointer. An assumption will always be implicit in nature. When I say implicit in nature, it will never be written कि क्योंकि मैम को लगता है बच्चे हिंदी या इंग्लिश समझेंगे. नहीं नहीं नहीं, ये लिखा नहीं होगा, लेकिन ये मान लिया गया होगा. रिमेंबर, ये घर का फाउंडेशन है. वो फाउंडेशन आपको दिखेगा नहीं. घर दिखेगा आपको, मैम कह रही है वेट करो 2 मिनट के लिए, आपको घर तो दिखेगा लेकिन आपको ये फाउंडेशन नहीं दिखेगा. तो ये हमेशा इम्प्लिसिट होता है, ये हमेशा अंडरलाइन बिलीफ होता है. किसका बिलीफ होता है? रिमेंबर, स्पीकर का, जो स्पीकर मान लेता है ऑलरेडी. ओके, हाय क्लैट व्लॉगिंग. ओके, ये आया सबको समझ में कैसे वो इम्प्लिसिट होता है? दूसरी चीज जो हमने समझी थी वो ये थी कि ये एक नेसेसरी सपोर्ट होगा. Now this is a very important point. Please understand how is it a necessary support. So my question was, मैंने आपसे क्या बोला इस स्टेटमेंट में? Let me write that down for you. My statement was, please wait for 2 minutes. Okay, and the result was that students waited. ये मेरा रिजल्ट था. जैसे मैंने रिक्वेस्ट किया लोगों से, बच्चों ने मेरा वेट किया. इसका एक अंडरलाइंग असम्पशन था दैट द टीचर बिलीव्स दैट स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड हिंदी और इंग्लिश, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई शी स्पोक इन दिस स्पेसिफिक लैंग्वेज. ये होना जरूरी है इस स्टेटमेंट से इस स्टेटमेंट तक पहुंचने के लिए. आई विल रिपीट दैट अगेन. ये वरुण, कितने अकाउंट बनाते हो तुम? वाई डू यू स्पेंड सो मच टाइम ऑन यूट्यूब? क्लैट व्लॉगिंग, अरुण शर्मा आर्मी, अंकुर शर्मा आर्मी. आई वंडर व्हाई आर यू डूइंग इट. ओके, सो बैक टू इट. इस स्टेटमेंट से इस स्टेटमेंट तक पहुंचने के लिए ये जरूरी था. इट वॉज एन अंडरलाइंग बिलीफ मेड बाय द ऑथर विच लेड टू द स्टूडेंट वेटिंग. अगर स्टूडेंट हिंदी इंग्लिश नहीं जानते तो वो शायद वेट नहीं करते मैम के इस स्टेटमेंट के बाद. सो ये एक नेसेसरी स्टेटमेंट हो जाता है बिलीव करने का. ठीक है, तो अल्टीमेटली प्रेमिस और कंक्लूजन, प्रेमिस से हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, प्रेमिस से कंक्लूजन ड्रॉ करने में एक गैप होता है और वो गैप को फिल करने के लिए हम अजम्पशंस को यूज करते हैं. ओके, नाउ दैट्स अनदर थिंग. लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंटर. बट थर्ड पॉइंटर से पहले एक क्वेश्चन आपसे मैं सॉल्व करवाती हूँ. लुक एट दिस क्वेश्चन एवरीवन. मुझे बताओ कौन कौन से अजम्पशन यहां फॉलो करेंगे. इसको आंसर करो, फिर थोड़ी और बात करेंगे अजम्पशंस की. बताइए क्या क्या फॉलो करेगा. इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी अबाउट दिस केस, यू मे कॉन्टैक्ट योर कंपनीज लॉयर. ईच कंपनी हैज अ लॉयर एंड द कंपनीज लॉयर इज thoroughly briefed about this case. What do you think? दोनों भी फॉलो कर सकते हैं, एक भी कर सकता है, नीदर भी कर सकता है.
Answers, guys. I'm expecting an answer. I'm not going to give you the answer. गलत होगा तो भी क्या होगा? तजुर्बा होगा. आंसर बताइए. Assumption one. Okay. So what we learned was that an assumption is a necessity believed by the speaker. Okay, it's a necessity. It needs to be there because it's the foundation of the house. Without the foundation, the house cannot be made. It has to be there. So we're going to focus on which of the following is a necessity for this statement to be intact. Okay, so the statement says, in case of any difficulty about this case, you may contact our company's lawyer. For example, I'm a company's employee. Okay, मैं कंपनी के एम्प्लॉय हूं और मैं आपसे बोल रही हूँ, सब लोग ना बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से, बिकॉज आंसर किसी का भी सही नहीं है. ओके, घर बनाया, घर बनाने से पहले फाउंडेशन बनाया, फाउंडेशन दिखा नहीं, लेकिन फाउंडेशन होना बहुत जरूरी है. फाउंडेशन नहीं होगा तो ये घर खड़ा ही नहीं हो सकता. For this house to stand on its own feet, the feet are the assumption. Okay, the question is probably given by an employee of an organization. The employee says that in case you face any difficulty, please speak to our company's lawyer. Our company's lawyer. Does that necessarily mean each and every company has a lawyer of its own? I am the employee of this organization. I am commenting about my company's lawyer. कि कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे कंपनी के लॉयर से बात कर लेना. तो तुमको क्या पता कि रिलायंस में या फ्लिपकार्ट में या अमेजॉन में लॉयर्स होते हैं या नहीं होते हैं? हाउ डू यू नो दैट अबाउट एवरी अदर कंपनी? कैन यू बी एब्सोल्युटली श्योर अबाउट दैट? No, it is not a necessity for I as an employee to give you this statement. This is not a necessity. Even if each company does not have a lawyer, I as an employee of this company can give you the statement क्योंकि मेरी कंपनी में तो लॉयर है. Varun, I have replied to you under your doubt. So everyone, did you understand why is one wrong? Everyone who marked one is absolutely wrong. मुझे मेरी कंपनी के बारे में पता, मेरी कंपनी में लॉयर है, ये मुझे पता है. Every company has a lawyer? Incorrect. On the contrary, if I tweak the first assumption, listen to this and tell me if that would be correct. This company has a lawyer. This company, जिसका employee statement दे रहा है, this company has a lawyer. Now, will it be correct? This company, जिसका employee ये बात कर रहा है, this company has a lawyer. Will that now be correct? You actually, Anshika, you saying the same thing that I said. So I'm assuming you agree with what I'm saying, that this company has a lawyer. This is going to be absolutely correct. Yes. This company has a lawyer. इस कंपनी में लॉयर ही नहीं होता तो मैं कैसे कहती आपसे कि मेरे कंपनी के लॉयर से आके मिल लो. इसका जरूरी ट्रू होना जरूरी है. लॉयर है तभी तो बोला कि कंपनी के लॉयर से आके मिलो. लॉयर होता ही नहीं तो क्यों कहती आ जाओ मेरे कंपनी के लॉयर से मिल लो. I wouldn't have said that. This is a necessity that this company has a lawyer. Okay, I know this company has a lawyer, and that's why I said, come and meet my company's lawyer in case you have any difficulty. Okay. Second, the company's lawyer is thoroughly briefed about this case. When I say कोई problem हो ना कंपनी के lawyer से मिल लेना, इसका मतलब कंपनी के lawyer को आपके केस के बारे में पता जरूर होगा. अगर उसको पता ही नहीं होता तो मैं आपको रेफर नहीं करती. This is also a necessity. इस स्पेसिफिक केस को अगर मैंने स्पेसिफाई किया, इस केस को लेके कोई प्रॉब्लम हो, मेरा कंपनी का लॉयर तुम्हें हेल्प करेगा, इसका मतलब मेरा कंपनी का लॉयर इस केस के बारे में आइडिया तो रखता है. इट इज अ नेसेसिटी. इट्स अ प्रीवियस ईयर CLAT question. Okay, CLAT 2009. Ultimately, there are a few things that we need to know. क्या पहला,
assumption लिखा नहीं होगा कि क्योंकि मेरे कंपनी के लॉयर को पता है इसलिए तुम आके मिल सकते हो, क्योंकि मेरे कंपनी में एक लॉयर है इसलिए तुम आके मिल सकते हो, ये लिखी नहीं होंगी चीजें, ये implicit नेचर की होंगी. Assumptions will always be implicit in nature. Two, they are necessary support. They have to be there. If my company does not have a lawyer, I will not ask you to come and meet my lawyer. If my company's lawyer does not have any idea about this case, I will not ask you to meet my lawyer regarding this case. Okay, so it is a necessary support. It bridges gaps. Gaps is come and see my lawyer. Why did I even say that? I said it because there was a gap that my company has a lawyer. So it bridges gaps. And the most important thing, for evaluating assumptions, we use the negation technique. What is the negation technique? Everyone, please be very attentive with the negation technique. Negation technique is that one technique that will 120% of the times help you find the correct answer. समझो क्या होता है negation technique, ठीक है? Let's go back to the question. Apply करते हैं negation technique. मेरा एक correct assumption था, this company has a lawyer. अगर ये गलत होता तो क्या मेरा क्वेश्चन भी गलत हो जाता? अगर इस कंपनी में लॉयर ही नहीं होता तो क्या मैं आपको मेरे कंपनी के लॉयर से मिलने आने को बोलती? If my company did not have a lawyer, will I even give you the statement that come and meet my company's lawyer? No. A correct assumption is one whose negation will lead to the question's negation. That is the negation technique. In any question where you're stuck, please use the negation technique. You will be able to find your answer 120% of the times. Not even 100, but 120% of the times. It's a sure shot technique. अगर कंपनी का लॉयर है तभी मैं आपसे बोलूंगी कंपनी के लॉयर से आके मिलो, वो नहीं होगा तो मिलने को नहीं बोलूंगी. We have a program for CLAT 2024. अगर CLAT 2024 का प्रोग्राम ही नहीं होता तो मैं आपको ये प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए कैसे बोलती? प्रोग्राम है तभी एनरोल करने के लिए बोल रही हूँ. काउंसलर्स का नंबर है तभी कॉल करने के लिए बोल रही हूँ. नंबर नहीं होता तो कॉल करने के लिए नहीं बोलती आपको मैं. ठीक है? So I hope everyone has understood what are assumptions. एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, ये वाला. What do you think is the correct answer? Never before such a lucid book was available on the topic. Naman, in another words, you can say the same thing like that. Yes. Two, very few topics. Sunshine, बाकी topics के बारे में पता आपको कुछ भी? Priya, do you know anything about other topics? I know about this topic. How can you assume anything about any other topic? क्वेश्चन में जितना लिखा है ना उतनी बात पे ही ध्यान देना है. तो अगर क्वेश्चन कह रहा है इस टॉपिक पे आज से पहले इतनी अच्छी बुक कभी भी नहीं आई तो मुझे सिर्फ इस टॉपिक के बारे में पता है. बाकी टॉपिक्स के बारे में आप कैसे बोल सकते हो कि बहुत ही कम टॉपिक्स पे लोग लिख पाते हैं? नो नो नो, टू इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. The correct answer is assumption 1. Two of you got that correct and that's Divyanshi and Anshika. It's assumption 1. अगर बहुत सारे टॉपिक्स पे बुक्स लिखी जाती हैं तो भी तो ये स्टेटमेंट दिया जा सकता था. अगर बहुत कम बुक्स पे अच्छी बुक्स लिखी जाती टॉपिक्स पे तो भी ये स्टेटमेंट दिया जा सकता था. That means the statement is not dependent on 2. Incorrect. Let's see if the statement is dependent on assumption 1. Some other books were available on this topic before. Yes, they were. And now this is the most lucid book. आज के पहले इतनी lucid book कभी नहीं लिखी गई. इसका मतलब आज से पहले बुक्स तो लिखी गई लेकिन इतनी lucid कभी नहीं लिखी गई. Never before means there was a before of books. Before means there were books written. It is only and only one
that follows. तो बच्चे आपको ध्यान क्या रखना है कि assumption की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. क्लैट में, एलिट में बहुत सारे assumption के questions आते हैं. You have to be good with them. I've taught you the theory. You need to practice that. You can download an app. There are many questions there. Please practice it. Otherwise, you can see me in the classes. We've anyway launched a CLAT 24 comprehensive course. That's the number of our counselors. Unko phone karo. You may see us in the batches with more of such theory. We have a session happening on our YouTube channel 27th of May 9 p.m. अभिमन्यु सर बताएंगे जनवरी से अप्रैल तक का पूरा जीके रिविजन, उसको अटेंड करना है. एंड एक वर्कशॉप हो रही है 4th of June 6 p.m. जहां अभिमन्यु से डिस्कस करेंगे लास्ट 200 डेज जो आपके पास बचे हैं, इसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके लिए क्लैट 2024 के लिए. इसको मिस नहीं करना, ठीक है. रजिस्टर करना पड़ेगा पहले सब चीजों के लिए. आपको रजिस्टर करो. प्लीज डू नॉट लीव द वीडियो विदाउट लाइकिंग इट. इफ यू वाचिंग इट रिकॉर्डेड, मेक श्योर यू कमेंट अंडर द वीडियो. अच्छा चीज लिख दो मैम, बहुत अच्छा और सेशंस चाहिए. I'll be very happy. Follow us on Instagram, Facebook, Telegram, download app on Google Play. ये सारे handles के links are there under my video in the description box. Thank you so much, everyone. I shall see you with part 2 of conclusions very soon. Work very hard, practice questions, and